हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 10th का चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में एनसीईआरटी के ब्लू बॉक्स के क्वेश्चन को मैं आज आपके साथ सॉल्व करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लू बॉक्स का जैसा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, कौन से लिक्विड है जो रूम टेम्प विच इज़ द मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो मर्करी इज़ द मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सा मेटल है जो चाकू से कट सकता है? सोडियम इज द मेटल विच कैन बी कट बाय अ नाइफ। विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। विच इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट? लेड इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ malleable and ductiles. A substance that can be beaten into thin sheets is said to be malleable. For example, iron. A substance that can be drawn into wires is called ductile. Question 3. Why is sodium kept immersed in a kerosene oil? Sodium reacts so vigorously with oxygen that it catches fire when kept in the open. Hence, to protect the accident fire, it is kept immersed in a kerosene oil. It can't be immersed in the water because there is a violent reaction. Next, write the equation for the reaction. Iron with steam, that is Fe plus water, that is gives iron oxide plus hydrogen. दूसरा, calcium and potassium with water. The calcium का Ca plus water gives calcium hydroxide plus hydrogen gas is released. Potassium with water gives potassium hydroxide plus hydrogen. क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें ए बी वेरियस 3-4 तरह के मेटल्स दिए हुए, ए बी सी और डी नाम दिए हुए और उसकी अलग अलग क्वेश्चन है। चलिए, आपके पास बुक है, आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल? अब इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है? आउट ऑफ आयरन, जिंक, सिल्वर, जिंक इज एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिव सीरीज, हेंस बी इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। पार्ट 2 दूसरा क्वेश्चन पूछता है, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट? तो क्या होगा? Displacement reaction will take place. Blue color of copper will fade and reddish particles of the copper will settle down. That is B plus copper sulfate, barium sulfate plus copper. B हमारा यहाँ साथ मिल रहा है। उसके बाद पूछा जा रहा है थर्ड क्वेश्चन में कि ये सारे मेटल्स को आपको अरेंज करना है इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग। तो आप देख सकते हैं B इज ग्रेटर देन A एंड A इज ग्रेटर देन C एंड C इज ग्रेटर देन D. Next question. Why do ionic compounds have a high melting point? Ionic compounds के high melting point क्यों होते हैं? There are strong forces of attraction between the opposite charges of ions in an ionic compound. Considerable amount of energy is required to break strong inter-ion attraction. Therefore, they have a high melting point. 10. Define the following terms: mineral, ore, and ganges. First, minerals. The elements or the compound which occurs naturally in the earth crust are known as minerals. Mineral form which metals can be extracted profitably are called ores. Impurities such as soil and sand which are present in the minerals are called amines. Name 2 metals that are found in the nature in free state, that is gold and platinum. Okay, write the chemical process used for obtaining metals from oxides. The method is reduction. Question number 14. Which metal do not corrode easily?
Metals which are at the bottom of the reactive series do not corrode easily. For example, silver. Next, what are alloys? It is a homogeneous mixture of two or more metals or a metal and a non-metal. थैंक यू फ्रेंड्स। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे 3 मिनट्स मैथ्स को प्रमोट कीजिए अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।